दोस्तों एआई कितना डेंजरस और पावरफुल हो सकता है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसमें बताया गया है कि एआई कितना डेंजरस और पावरफुल हो सकता है और इसके जरिए क्या क्या हो सकता है और फ्यूचर में जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं उनको फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं एआई की वजह से, या फिर आप यूं कहें कि आप जो सोशल मीडिया पर बच्चों के फोटो अपलोड करते हैं उसकी वजह से बच्चों पर कितनी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं एआई की वजह से, वो सब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए। Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. तो दोस्तों आपने देखी एक छोटी सी क्लिप जिसमें बताया गया है कि एआई कितना डेंजरस हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची जो कि बड़ी हो जाती है लेकिन वो वर्चुअल होती है बच्ची जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही वो वीडियो क्रिएट की जाती है, जिसमें बताया गया है कि एक बच्ची जो छोटी थी और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी फोटोज किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं और किस तरह से उन फोटो को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो इस फोटो के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप किसी भी बच्चे की फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी शेयर ना करें। कुछ कंट्री में ये भी रूल चालू हुए हैं कि जब बच्चा मेजर मतलब 80+ हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, उसकी परमिशन के बाद ही सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए जाएंगे। मतलब कि बच्चे के परमिशन की बिना फोटो शेयर नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि उस क्लिप में हमने यही देखा कि बच्चों का फोटो किस तरह से आप शेयर करते हैं, उनका आगे चल के गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल करें और फालतू के फोटोज वगैरह अपलोड ना करें। जब बच्चे एडल्ट हो जाए तो वो खुद उनका अधिकार है कि वो किस तरह से अपने फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हैं। वीडियो चलिए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।